Hello everyone, this question appears in class 7th NCERT chapter of Comparing Quantities. This is second question of its exercise 8.1. So the question says that in a computer lab there are 3 computers for every 6 students. How many computers will be needed for 24 students? So हमें given है number of computers needed for 6 students. ये हमें given है 3. तो हमारे पास number of computers needed for 1 student, 3 by 6 is equal to 1 by 2 and हमें फाइंड आउट करना है for 24 स्टूडेंट्स. सो यूनिटरी मेथड से हम इसका फाइंड आउट कर लेंगे कि 24 स्टूडेंट्स के लिए हाउ मेनी कंप्यूटर्स नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स. सो हमें एक स्टूडेंट के लिए हाफ चाहिए, तो हाफ इंटू 24, 2 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा 12 टाइम, आ जाएगा 12. So 12 computers will be needed for 24 students. Thank you.